Hello students, the question is, how does Einstein's photoelectric equation explain the emission of electrons from a metal surface? Explain briefly. Plot the variation of photocurrent with option A, collector plate potential for different intensity of incident radiation, and option B, intensity of incident radiation. So the problem is based on the topic photoelectric equation, and we have to explain why the electrons are ejected from the metal surface. And in the second part of the problem, we have to plot two graphs. First one is the graph between the photocurrent and the plate potential, collector plate potential, and the second graph is between the intensity and the photocurrent. तो यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम पूछी गई है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस पूछी गई है। पहले पार्ट में हमें बताना है कि पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों इंजेक्ट होते हैं किसी भी मेटल सरफेस से, उसका बेसिक रीजन क्या है। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, ग्राफ प्लॉट करने को कहे गए हैं। दो ग्राफ प्लॉट करने हैं हमें। फर्स्ट ग्राफ बिटवीन द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड द फोटो करंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए। और दूसरा ग्राफ हमें प्लॉट करना बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द फोटो करंट। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसमें हम कह सकते हैं, फॉर द फर्स्ट पार्ट वी कैन से दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन हैज अ सर्टेन threshold value. When there is a certain threshold value, then only the electrons are ejected. The process is that there is a metal surface, and on that metal surface there is the incident radiation, and incident radiation impinges on the metal surface, and the incident radiation is in terms of the photon. So when the photons are having certain energy, and that energy is greater than the work function, then only the electrons get ejected. Formally, we can write down the answer as an electron absorbs a quantum of energy h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the incident radiation. If the energy of the absorbed quantum exceeds the minimum energy needed by the electron to escape from the metal surface, having a certain work function phi, then the electrons get emitted. So this is the formal statement. And the kinetic energy of the ejected electrons is given by this equation, K max equals to h nu minus phi naught, where K max is the maximum kinetic energy of the ejected photoelectrons, h is the Planck's constant, nu is the frequency, and phi naught is the work function. Now we are going to show you the, I am going to show you the graphs, the two graphs which we have to plot for the second part of this problem. So the first graph is between the collector plate potential and the photocurrent. So the first graph looks like this. This is between the collector plate potential and the photocurrent So the graph looks like this for a particular intensity, say I3. And when we reduce the intensity, the graph looks like this. This is for I2 intensity. Now we can say that I3 is greater than I2. Similarly, if we further reduce the intensity, the graph looks something like this for intensity less than I1, less than I2. And these graphs merge at a certain point known as the stopping potential. Stopping potential. So at this particular value of the potential, the photocurrent becomes zero. Now this side is known as the retarding potential. Retarding potential. So this is the first graph which we have to plot. The second graph is between the intensity and the photocurrent. So if we take the x-axis as the intensity and y-axis as the photocurrent, then the graph is a straight line. So there is a straight line between intensity and the photocurrent. So this is the second graph which we have to plot. तो यहाँ पे हमें जो दूसरे पार्ट में कहा गया है, दो ग्राफ प्लॉट करने को कहे गए हैं।
पहला ग्राफ हमें प्लॉट करना है बिटवीन कलेक्टर पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड फोटो करंट। तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए हमें इस तरीके के ग्राफ दिखाई देते हैं, जहाँ की जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होते जाएंगे। और ये सारे ग्राफ्स जो है मर्ज होते हैं, ये सारी लाइंस जो है, कर्व्स जो है मैच होते हैं एक सर्टेन पॉइंट पे, जहाँ फोटो करंट जीरो हो जाती है, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दूसरा ग्राफ प्लॉट हमें करना है बिटवीन इंटेंसिटी एंड द फोटो करंट। ये ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं फोटो करंट लीनियर मैनर में बढ़ती जाएगी। सो दिस इज द सेकंड ग्राफ। Hope you understand the explanation in the solution. Thank you.